Bismillahirrahmanirrahim. So we'll start with our first topic in your chapter, that is the chemistry of 3D metals. 3D metals आप जानते हैं which are present in the periodic table. They start from scandium to zinc. ठीक है. So our topic is oxidation states displayed by chromium. यानी chromium जो 3D सीरीज का एक मेटल है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उसके बारे में बात होगी. Now at the end of this class, ये जितना भी क्लास इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे they will be you can download them through a link which will be present in the description. और इसमें वही पॉइंट होंगे which are useful for your exam purpose as well as जो आगे जितने भी competitive exams है उसमें आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है. So you can download this and you can use it for the exam purpose. So let's move. So we'll begin with chromium. Let me make use of the pointer. सबसे पहले it's important to remember the atomic number 24 and then second electronic configuration. This is the electronic configuration. अब यहाँ पे argon है, we know argon it's a noble gas, its atomic number is 18. 18 के बाद 5 and 1 that is 6, so it becomes 24. Now talking about its oxidation states. Oxidation states कैसे बनते हैं? देखिए we know that in the transition elements ये जो 4s और 3d energy level है they have relatively similar energy. इनकी एनर्जी बहुत क्लोज रहती है. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ से भी निकाल सकती हैं और यहाँ से भी. जब इलेक्ट्रॉन्स आप दोनों से निकाल सकती हैं सो दैट्स वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी. सो दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो बिकॉज दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक 0 +2 +3 +4 +5 +6. सो दे आर द कॉमनली एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम. ठीक है. अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स the definition of oxidation states you can understand that अगर कोई भी आपके पास क्रोमियम का कोई कंपाउंड हो and then you assume that वो जो bonds उसमें होंगे जो क्रोमियम के साथ अटैच होंगे they will be ionic bonds. Now in that scenario the hypothetical charge on the chromium that will be called the oxidation state of chromium. अब इनमें से oxidation states में जो सबसे important है that is 0 +2 +3 +6. So they are the common oxidation states of chromium. हमें क्या रिमेंबर करना है इसमें? फर्स्ट इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. आप देख सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव हुआ यहां से. ठीक है. सो दिस इज योर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव हुआ. सो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बिकॉज इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में नॉर्मली जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0. सो यू हैव हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम. सो यू एटलीस्ट रिमेंबर वन एग्जांपल. देन इफ यू टॉक अबाउट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको क्या करना है? पहला इलेक्ट्रॉन S से निकालना है. सो रिमूव 1. फिर आपको +2 चाहिए तो दूसरा D से निकाल लीजिए. सो इट इज आर्गन 3d4 4s 0. एंड देन यू कैन रिमेंबर एनी वन ऑफ दिस कंपाउंड्स. सो आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन रिमेंबर क्रोमियम हेक्सा एक्व डाइपॉजिटिव. रिमेंबर वन एग्जांपल. अदरवाइज यू कैन रिमेंबर एनी वन. नाउ लाइकली +3 आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन और यहां से रिमूव कर लीजिए. दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यू कैन रिमेंबर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल दिस इज इंपॉर्टेंट जो आगे भी आपको काम आ सकती है. हेक्साअमीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. लाइकली व्हेन यू टॉक अबाउट +6 आई होप यू रिमेंबर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. आपने इस पे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे लैब में. इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा इसको. फॉर एग्जांपल पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर द टेबल. नंबर 1 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड 1 एग्जांपल. नाउ अब चलते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनकी तरफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए number 1, with increase in the oxidation state of chromium the acidic character of oxides of this metal increases. Now chromium जो है ये बहुत टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है. ऑक्साइड्स मींस the compounds of chromium with oxygen. For example CrO, Cr2O3, CrO3. अगर आप यहाँ पे oxidation states का निकालेंगे it's +2. You calculate the oxidation state it's +3. यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे इट इज +6. आई सपोज यू नो द वे टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्योंकि ये बड़ा आसान है. हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया गया. ना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है व्हेन क्रोमियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ दैट कंपाउंड बिहेव्स एज बेसिक व्हाइल एज व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट द कंपाउंड बिहेव्स लाइक एसिडिक. और जो दरमियान में है जो इन बिटवीन है दे बिहेव एम्फोटेरिक मींस बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिस. ये जो कॉन्सेप्ट है oxides acting as acids and bases
इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है एसिड बेस कॉन्सेप्ट का, दैट्स कॉल्ड द लक्स फ्लड्स कॉन्सेप्ट. So you can read this Lux floods concept. I'll just write down here for you Lux floods concept of acids and bases. Lux floods concept. आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं. As per Lux floods concept, अगर कोई भी ऑक्साइड, if it is an acceptor of oxide ion O2 negative, if any of the species it accepts oxide ion means O2 negative, so that chemical species will be called as the acid, while as a chemical species that can donate the oxide ion, that's called as a base. तो उसके हिसाब से क्रोमियम का जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है that is acidic, while as जो low oxidation state वाला ऑक्साइड है that is basic. Now moving to the next, that's the covalent compounds, covalent character of compounds. Now with increase in the oxidation state of chromium, the covalent character of the compound increases. So we know that the compounds of chromium, they are different oxidation state. तो जो compound इसमें chromium high oxidation state में present हो, now that compound उसका ज़्यादा covalent character होगा. Now according to that, chromium plus 2 compound they are ionic, plus 3 में भी ionic character होता है, लेकिन जो plus 6 compounds हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आपने लैब में देखा होगा, orange color type compound. So if you take that plus 6 compound, so इसके जो बॉन्ड्स होंगे क्रोमियम के साथ, इन्हें इसमें जो बिहेवियर होगा दैट विल बी कोवैलेंट. तो जब बिहेवियर कोवैलेंट है, सो इट विल बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. जब बिहेवियर आयनिक होगा, दैट विल बी सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्वेंट्स. ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट, द कंपाउंड्स हैविंग क्रोमियम मेटल विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Now as far as it is different oxidation states are concerned, +2, +3, +4, +5, +6, 0, इनमें +3 state is highly stable. अब इसको आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं? I can just give you the hint. आपने पढ़ा होगा the crystal field diagram. When you make the crystal field diagram of this metal, the chromium, T2G state में आपके सारे अनपेयर्ड होती है, आपकी crystal field energy बहुत ज़्यादा होती है. So according to that, +3 state is more stable. Now another important point is that chromium plus 2 compound, they are strong reducing agents, while as chromium plus 6 they are strong oxidizing agents. Now what does that mean? We know जब charge आपका +2 होगा and when the charge is +6 means आपने 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है. That means it is deficient of electrons. So इसके पास अब टेंडेंसी ये होगी that will try to gain the electrons from somewhere. So it will remove electrons from some other species. That means it will act as oxidizing agent. So when the chromium is present in any of the compounds, when the chromium is in the +6 oxidation state, they act as strong oxidizing agent, and likely that is present in the +2, so they act as the reducing agent. That means they can lose the electrons and reduce others. ये बहुत important concept है. इसलिए organic chemistry में आपने पढ़ा होगा, हम oxidize करते हैं alcohols को into aldehydes, or in other compound we use oxidizing agents like dichromate ion. इस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट. So this is the reason they are oxidation states. ठीक है. So these are some of the important points as far as your oxidation states displayed by the chromium are concerned. So this is all about, you should remember. I don't think इससे ज़्यादा important आपको ज़रूरत है. ये जो points है, you just stick with these. They're useful for your exam as well as जो भी competitive exams है, तो यहाँ से question आता है. So this is only what I have done today. In the next classes we may take 2 metals also, so that we can finish our topics and at least try to cover up the 2 chapters within 1 month's period. So अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप पर्सनल नंबर पे लिख सकते हैं 8491857406 पे आप मैसेज लिख सकते हैं. मैसेज के ऊपर आप लिख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्लेड बाय क्रोमियम. So this is all about the topic we have today. Thank you.